The National Testing Agency is conducting a nationwide mock drill today as part of preparations ahead of the NEET UG re-examination schedule for tomorrow. The exercise is aimed at testing exam day readiness, security arrangements and coordinations across centers to ensure a smooth and secure conduct of the examination. Officials have stated that the drill will help identify and address any last-minute gaps in logistics and operational preparedness. And now joining me on the telecast is several of my colleagues, Belly from Bengaluru, Ranik from Bengal, Razuella Khan from Jaipur. Starting my conversation with Belly. Belly, from where you are at, we have also seen a case of a 20-year-old NEET aspirant dying by suicide. And the family has cited the reason of stress and the fear of failure as well. Obviously, this is not the first time that something like this has happened. Ahead of these exams, how are the authorities preparing on the ground? Because this is something that is not something that on the larger schemes of things, it's not just about paper leaks, it's also about the future of these students. Absolutely, Ria. So this incident, unfortunate incident, had happened in Salem of Tamil Nadu, where the suicide of this 20-year-old girl has come to light, wherein her parents have alleged that it was her fear and anxiety that could have caused her to take this extreme step. She was preparing for the re-NEET examination at her grandmother's house, is what we believe from the police sources. And the police have taken up a case and they are investigating into it. And this unfortunate incident has also kind of affected the students' academia as such, especially the ones who are preparing for the NEET exams. The ones who have scored very good marks in their second PU examination, they are the ones who are like kind of very much affected, is what the teachers or the coaching center runners say. These students are kind of, they have prepared and they have already taken up the examination with all their honesty, and then all of a sudden they hear this news that the examination has been cancelled, and this is a kind of an emotional drain that's happening on students, is what some students are explaining. But however, some of them have overgrown that, and they are kind of treating this as another preparation or rebrushing of the same things that they have studied. So now the NTA has kind of for the re-NEET examinations have put out certain restrictions, and they are sure that this time there will be no foul plays or misdemeanors. Anything of that matter is what we are getting to know. So now coming to Bengaluru or Karnataka has a total of 31 re-NEET centers as of now designated by the National Testing Agency, and in Bengaluru alone there are two. One is Bengaluru urban and Bengaluru rural, and there are two codes that are given for these two centers, and the students, the candidates who are appearing for the re-NEET examination will have to go to the official NTA website to get to know which centers are they supposed to go and write their examinations. So besides that, we are also getting to know that the Bengaluru police have issued an order, a prohibitory order, that around 200 meters area across the NEET testing centers will be declared as a prohibited zone, and all the Xerox and the cyber centers will be closed on the NEET exam day, that is 21st. Like you said, rightly pointed out, there is mock drills that's happening today in front of the two examination centers in Bengaluru as to how the examination papers would reach the centers. And before that, they've got a lot of instructions basically for the students to abide by, and this they have reiterated in their website as such, in the form of the essential items that needs to be carried as well, along with the dress code, which would be the applicant should wear light clothing without long sleeves. Candidates in traditional or customary dress must arrive at least 1 hour early for frisking.
and the entry time. So no entry would be allowed after 1:30 p.m. Plan the travel to reach your NEET UG 2026 exam centers in especially Bengaluru, where there is heavy traffic, and the stakeholders have also advised the students to take metro and reach the examination center well in advance, is what it's being stated. And coming to the PWD certificates, the candidates with the disabilities must bring their PWD certificates to get category relaxations, and prohibited items list also include stationary items like calculators, writing pads, pens, shouldn't be brought to the exam center. And coming to the footwear, avoid wearing shoes or high heels. Sandals would be the ones that would be recommended for all these candidates who come to take up the exams. And the photograph requirements as well. The students must carry one postcard size colored photograph with a white background. This photo must be pasted onto the pro forma downloaded with your NEET admit card. And the valid ID proof, the students would be bringing a valid identity proof such as a voter ID, Aadhaar card, passport, PAN card, or ration card. Any other government issued document is also acceptable. So coming to the admit card and photo, the students should present their admit card with an affixed passport size photograph. Also carry an extra passport size photograph for an attendance sheet. And the EWS certificate is not needed at the NEET 2026 exam. It's required during the application counseling stages. So these are the things that are being directed or instructed to the students well in advance, even as the mock drill is being carried out. And like I earlier referred to, the police are kind of deploying securities at these two re-NEET centers, which would be one in HSR layout as per police sources that told me today morning, and the other the center would be in KR Puram, which is in the Bengaluru rural or the Bengaluru north side. So the students from Bengaluru urban and rural are divided into two categories, and they have been asked to attend the re-NEET examination at their designated center, which they would be knowing through their when they download their admit cards online from the official website of the NTA. Priya. All right, Belly, stay on with me. I would like now to go across to Razuella Khan joining from Jaipur. Razuella, this situation is about a crisis of trust. At the center of this is the stakes of the future of the students that are involved, because it's a lot for a student who's been preparing for months, years, and putting in a lot of effort in terms of this exam, and to do it all over again. It's a lot for any student, any individual to go through it again. And also the parents involved in this who are coming from a financial situation where they have to either take a loan, or any situation like this is obviously a lot, it's very stressful. But a question mark is raised in terms of what next? Would this exam be actually foolproof? Would the center be able to make sure that this exam goes through in a fair manner, and it's a foolproof and there's no paper leaks at all? Because obviously for a student there's a doubt in their mind. So what exactly are the authorities doing on the ground to make sure something like this does not happen tomorrow? देखिए, जिस तरीके से मैं नीट एग्जाम की बात करूं तो कल दोपहर को 2 बजे ये पेपर शुरू होगा, लेकिन पिछले जिस तरीके से तारीखों का ऐलान हुआ था उसके बाद से लगातार जो तमाम तैयारियां हैं वो राजस्थान के अलग अलग इलाकों में कर ली गई थी। अगर वर्तमान में राजस्थान की बात की जाए तो ये राजस्थान वही इलाका है जहां पर राजस्थान एसओजी ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए तकरीबन कई लोगों को हिरासत में लिया था, जिनसे जो नीट का जो पहले वाला पेपर हुआ था वो लीक हुआ था। बाकायदा इस बात की तस्दीक हो गई, सीबीआई पूरे मामले को लेकर जांच की जा रही है। वहीं जो कल एग्जाम होना है पूरे राजस्थान नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में एक साथ आयोजित होना है। पहली बार ऐसा हुआ है जब जिन की परीक्षा केंद्रों के अंदर ड्यूटी लगाई गई है उन तमाम लोगों को अलग से ट्रेनिंग दी जा रही है, मॉक ड्रिल की
जा रही है। राजस्थान के कई इलाकों में जो है सुबह से मॉक ड्रिल शुरू हो चुकी है। वहीं जयपुर की यदि मैं बात करूं तो मॉक ड्रिल को लेकर तकरीबन 12 बजे का जो समय है वो अलग अलग इलाकों में तय किया गया है। प्रत्येक परीक्षा सेंटर पर मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। पुलिस विभाग के अधिकारी, प्रशासन विभाग के अधिकारी, एनटीए, शिक्षा विभाग जो वहां पर परीक्षा में ड्यूटी देने वाले उनको किस तरीके से ट्रीट करना है, बच्चों को लेकर किस तरीके से तमाम डॉक्यूमेंट खंगालने हैं, तमाम दस्तावेज चेक करने हैं, उन तमाम चीजों को लेकर जो है लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी और बाकायदा मॉक ड्रिल की जाएगी। इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो राजस्थान के भीलवाड़ा इलाके में टेलीग्राम पर एक फर्जी पेपर बेचने वाले जो गिरोह है उसको पकड़ा गया है। बाकायदा भीलवाड़ा के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में जिस तरीके से बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, कहीं ना कहीं जो सांसें हैं वो प्रशासन की फूल गई थी, लेकिन राहत की बात है कि पूरी तरीके से फर्जी जो पेपर है वो पाया गया। इसके अलावा मैं एसओजी बात करूं यानी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की, तो उसने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली गई है। राजस्थान के जो एडीजी है एसओजी के विशाल बंसल, उन्होंने कल इंडिया न्यूज से खास बातचीत की थी। इंडिया न्यूज से खास बातचीत के दौरान उन्होंने कहा था कि अति संवेदनशील केंद्र कौन से हैं और संवेदनशील केंद्र कौन से, इसके बारे में हम मीडिया के जरिए बात नहीं पहुंचा सकते क्योंकि जो गुनहगार हैं वो यहाँ पर आगाह हो जाते हैं। तो लिहाजा उन्होंने ये बात कही थी, तस्दीक की थी कि प्रत्येक जिले के अंदर एक जो है स्ट्रॉन्ग रूम हम लोगों की तरफ से बना दिया गया है। एनटीए के लगातार संपर्क में है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तमाम चीजों को लेकर लगातार जो विशेष निर्देश है वो देते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे से राजस्थान पुलिस के मुखिया डीजीपी जो है राजीव शर्मा की बात की जाए, वो लगातार जो है पूरे मामले को लेकर डायरेक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं। कल दोपहर को 2 बजे भले ही ये पेपर शुरू होगा, उससे पहले हेलीकॉप्टर के जरिए राजस्थान की राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जो पेपर है वो पहुंचना शुरू हो चुके हैं। 3 हेलीकॉप्टर के जरिए एनटीए ने जो पेपर है वो पहुंचा है। बाकायदा जो जिम्मा अलग अलग अधिकारियों को दिया गया है उसी जिम्मे के तहत जो तमाम पेपर हैं वो परीक्षा केंद्रों पर पहुंचाए जाएंगे। कल दोपहर को जो है परीक्षा शुरू होगी 2 बजे के करीब। 27 लाख से ज्यादा जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर पूरे इस नीट परीक्षा के अंदर जो है शामिल बताए जा रहे हैं। बहरहाल पूरे मामले को लेकर अब किस तरीके से मॉक ड्रिल के बाद आगे का प्रशासन का रहता है वक्त बताएगा। जी All right, Razwala, stay on with me. I also have with me Renik. Renik, what exactly are the authorities doing on the ground to make sure that the exam tomorrow is foolproof and there is it's conducted in a fair manner? देखिए कल जो नीट एग्जाम होने जा रहा है उसी को देखते हुए 3 स्टेप सिक्योरिटी जो है वो अरेंजमेंट किया गया है। हर जो एग्जाम सेंटर होने जा रहा है उस जगह पर 3 स्टेप सिक्योरिटी जो है वो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और उसके साथ साथ ही आज जो मॉक ड्रिल वो सुबह 11 बजे से लेकर 12 बजे तक ये मॉक ड्रिल का जो प्रक्रिया किया जाएगा हर एक सेंटर पर। जैसे कि सूत्र से खबर मिल रहा है कि जितना भी जगह है, जितना भी एग्जाम सेंटर है उस जगह पर जिस तरीके से सिक्योरिटी इंतजाम किया गया है उसी तरीके से स्पेशल टीम को भी तैनात रखा जाएगा उस जगह पर। उसके साथ साथ ही जो स्टूडेंट्स आएंगे, स्टूडेंट्स को नया तरीके से एडमिट कार्ड जो है वो उठाने के लिए कहा गया है। और उसके साथ साथ ही जो सेंटर है उस सेंटर के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस जो है वो किया जाएगा। 3 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम हर एक सेंटर पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। उसी का मॉक ड्रिल जो है वो आज किया जा रहा है। जैसे कि इंडियन एयरफोर्स के जो हेलीकॉप्टर है उसके माध्यम से जो ऑलरेडी क्वेश्चन जो है क्वेश्चन पेपर जो है वो आ पहुंचा है। और पश्चिम बंगाल का जिस जगह पर ये सेंटर तैयार किया गया है उस जगह के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस रखा जा रहा है। और उसके साथ साथ साइबर टीम को भी अलर्ट मोड में रखा जा रहा है। साइबर एक्सपर्ट जो टीम है उनको भी एग्जाम को देखते हुए अलर्ट मोड में रखा जा रहा है। और उसके साथ जो 3 लेयर सिक्योरिटी, उस 3 लेयर सिक्योरिटी में जो पहला एडमिट कार्ड चेकिंग, उसके बाद फिजिकल चेकिंग और उसके बाद ही दूसरा जो सिक्योरिटी चेकिंग वो 3 लेयर का चेकिंग जो है वो किया जाएगा। ऐसा उसके साथ साथ सिक्योरिटी के लिहाज पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो सामने नहीं लिया जा रहा है। ऐसा ही कहा जा रहा है। All right, Renik, stay on with me. I also have with me Varsha Sahai joining from Lucknow. Varsha, what exactly is the situation in Lucknow in terms of mock drills that are being conducted? How prepared are the authorities to conduct a free, a fair and obviously a foolproof exam in terms of NEET? देखिए, अगर नीट की परीक्षा की बात करें तो राजधानी लखनऊ में भी उसी तरीके से मॉक ड्रिल हो रहा है। उत्तर प्रदेश में पूरे अलग अलग सेंटरों पे ये मॉक ड्रिल एनटीए की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ पुलिस की भी व्यापक व्यवस्था की गई है। इस बार पुलिसकर्मियों को भी एक दिन पहले पूरी तरीके से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में पुलिसकर्मियों को बताया जाएगा कि आखिर वो किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था रख सकते हैं। मॉक ड्रिल की जो तैयारी है वो आज जिस तरीके से एनटीए के जरिए किया जा रहा है उसमें सभी जितने भी परीक्षा केंद्र है वहाँ
वहाँ पर परीक्षा शुरू होने से लेके OMR पेपर लेने तक पूरी जो तैयारी है उसका मॉक ड्रिल किया जाएगा। उसको पूरी तरीके से देखा जाएगा कि आखिर किस तरीके की तैयारी इस बार नीट की परीक्षा को लेकर है, क्योंकि पेपर लीक में जिस तरीके से लगातार सरकार को विपक्ष ने घेरा और जिस तरीके से बच्चों के साथ जिस लगातार जो सड़कों पर उतरे, उनको लेकर एक वृहद तैयारी नजर आ रही है। और इस बार उसी तरीके की तैयारी के प्रशिक्षण के कार्यक्रम को भी रखा जा रहा है, मॉक ड्रिल भी कराया जा रहा है और पूरी तरीके से 3 लेयर सिक्योरिटी के इंतजाम की व्यापक व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ सभी एजेंसियां भी सतर्क रहेंगी इस नीट परीक्षा को लेकर। STF से लेकर वॉर रूम बनाया जा रहा है, वॉर रूम के जरिए देखा जाएगा, जगह जगह पर मॉनिटरिंग की जाएगी, सभी CCTV कैमरों की मॉनिटरिंग की जाएगी वॉर रूम में। और वॉर रूम में पूरी तैयारी वृहद कर ली गई है और आज जिस तरीके से इन सभी चीज़ों का मॉक ड्रिल होना है, प्रशिक्षण होना है, उसमें वृहद तैयारी नजर आ रही है। और ये नीट की परीक्षा पेपर लीक ना हो सके उसको लेकर सरकार ने सबसे ज़्यादा तैयारी कर रखी है। और आज उसी तरीके से अन्य सभी सेंटरों पे कार्यक्रम है और मॉक ड्रिल है और साथ ही साथ प्रशिक्षण सभी पुलिसकर्मियों को दिया जा रहा है जिससे नीट परीक्षा में सभी जांच पारदर्शी हो सके। All right, Belly, as well as Varsha, thank you so much for joining me on the